Assalamu alaikum. My name is Faraz Shabir and I represent Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan. Today we are going to discuss prose from second year English, book 2, lecture number 2 and chapter number 2, the scientific method. Better sanitary conditions. बेहतर सफाई सुथराई के हालात. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. ये ख्याल तसव्वुर करना मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे कुछ बड़े बड़े शहरों के सफाई सुथराई के हालात किस तरह के थे. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. घरेलू कूड़ा क्रिकेट और दूसरे फाजिल मादा तंग, कच्ची और खस्ता हाल नकासी आब वाली शहरी गलियों में फेंक दिया जाता था. Animals wandered through the streets feeding upon the garbage. गंद में खुराक तलाश करते जानवर गलियों में फिरते रहते थे. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन. बैरूनी बैतुल खला आम थे. Many of them were situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. और इनमें से कई ऐसी जगहों पर वाक़िए थे जहाँ से इंसानी फजला बहकर इन कुओं में चला जाता जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते थे. टुडे आवर स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली. आज हमारे शहर की गलियाँ पक्की और उम्दा नकासी आब वाली हैं और उन्हें बाकायदगी से साफ़ किया जाता है. सिनोनिम्स देखते हैं और मीनिंग्स देखते हैं वर्ड्स के. सैनिटरी सफाई हाइजेनिक. अनपेव्ड कच्ची स्टोन. गार्बेज कूड़ा क्रिकेट. ट्रैश पेव्ड पक्की कारपेटेड. इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स. गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकना खिलाफ कानून है. सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स टू डिस्पोजल प्लांट्स. शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद नलों के ज़रिए गंदगी को ठिकाने लगाने वाली तनसीबात तक पहुंचाया जाता है. Through the use of the scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of disease like typhoid fever, cholera and dysentery. साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के ज़रिए ये वाज़ेह किया गया है कि गैर सेहत बख्श हालात मियादी बुखार, हैज़ा और पेचिस जैसी बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं. टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन विच कीप द सिटीज़ क्लीन एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज़. आजकल हुकूमतों के पास सफाई सुथराई के महकमे हैं जो शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं और इसी तरह ख़ास बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. एक सदी पहले बहुत से शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियां भरकर पानी लाना आम रिवाज था. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. कुएं से घर तक पानी एक ख़ास फासले से उठाकर लाना पड़ता था.
اب ہم اس پیراگراف کے سینونمز اور اس کے میننگز دیکھتے ہیں. سیویج کا مطلب ہوتا ہے گند، سینونم اس کا ہے ڈرٹ. ڈیمونسٹریٹڈ کا مطلب واضح کرنا، سینونم ایکسپلین. سینیٹیشن کا مطلب صفائی اور اس کا سینونم ہائیجینک. پریونٹ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سینونم اس کا ہوا سٹاپ. بکٹ فل کا مطلب ہوتا ہے بالٹی بھر اور اس کا سینونم ہے پیل فل. کنسیڈریبل کہتے ہیں کافی کو، اس کا سینونم ہے انف. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. اور یہ بہت ہی نہانے اور صفائی کے مقاصد کے لیے کفایت شاری سے استعمال کیا جاتا تھا. Often it came from sources that contained disease producing germs. اکثر یہ ایسے ذرائع سے ملتا جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے حامل ہوتے تھے. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. آج قصبے اور شہر پانی کے نظام رکھتے ہیں جو کہ عام طور پر گھریلو استعمال کے لیے کافی پانی فراہم کرتے ہیں. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. شہروں کی ترقی کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کی کئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی پانی فراہم کرنا بھی رہا ہے. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. لاس اینجلس نے 544 کلومیٹر دور دریائے کولوریڈو سے شہر میں پانی لا کر یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. ایک پائپ لائن یا آب ریز کے ذریعے روزانہ 1,000 ملین گیلن پانی ضلع کو فراہم کیا جاتا ہے. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. گھروں کو بالٹی کے نظام سے پانی کی فراہم کرنے کے مقابلے میں یہ ایک عظیم اور قابل ذکر پیش رفت ہے. اب ہم اس پیراگراف کے سینونمز دیکھتے ہیں. ورڈ ہے آپ کا sparingly. sparingly کا مطلب ہوتا ہے احتیاط سے. carefully. sufficient کا مطلب ہوتا ہے کافی enough. aqueduct کا مطلب ہوتا ہے پختہ نہر اور اس کا سینونم ہے canal. delivered کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور اس کا سینونم ہے distribute. remarkable کا مطلب ہوتا ہے قابل ذکر اور اس کا سینونم ہے notable. اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس. شکریہ. اللہ حافظ.